Hi friends, welcome to Avi's Amazing World. Chapter 8 Bandhar Band. Bandhar means monkey, Band means share. This is a drama. We can act this drama in a class. Sthan खुली जगह या कोई बड़ा कमरा. Where to act this play? We can act it in an open space. खुली जगह means open space or any big kamra room. Any big room we can play this drama. पात्र. पात्र means the character. एक बंदर और दो बिल्लियाँ. One monkey and two cats. 7-8 बरस का लड़का बंदर. 7 to 8 years old boy can act as a monkey. और 5-6 बरस की लड़की बिल्ली बन सकती है. और 5 to 6 years girls can act as the 2 cats. बंदर के लिए पोशाक. ड्रेस फॉर द मंकी. कॉस्ट्यूम. पीला चूड़ीदार पायजामा कुर्ता और दुपट्टा. येलो कलर पायजामा चूड़ीदार सेट विथ दुपट्टा मीन्स विथ शॉल जो कमर में पूंछे सी निकाल कर बांधा जा सकता है. एंड द दुपट्टा दैट इज शॉल शुड बी लॉन्ग इनफ सो दैट इट कैन बी टाइड एज द टेल. मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा. टू पुट ऑन फेस वी नीड अ मंकी मास्क जिसमें आंखें और मुंह की जगह छेद हो. एंड इन दैट मास्क द प्लेस वेयर आवर आईज एंड आवर माउथ विल कम इट शुड बी कट ओपन. बिल्लियों के लिए पोशाक. कॉस्ट्यूम्स फॉर कैट. काली सफ़ेद सलवारें. ब्लैक और वाइट सलवार कमीज दुपट्टा. सलवार एंड कमीज एंड दुपट्टा मीन्स शॉल एंड जो कमर में पूंछे से निकाल कर बांधे जा सकते हैं. सेम लाइक बंदर दिस ऑल्सो नीड्स अ लॉन्ग टेल सो वी नीड अ शॉल विच कैन बी टाइड एज अ. मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे. To put on face we need a mask of cats, one white cat and one black cat mask we need जिसमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके. And same like that of monkey, this mask also should have an open space near the eyes and mouth so that the person who is wearing that mask can see and talk. सामान. एक मेज. Some other things are also needed. Properties are needed for this drama. They are एक मेज one table. एक बड़ा मेज पोशा या बड़ी चादर one big table cover or a big bed sheet to cover the मेशा. टबल रोटी का एक टुकड़ा. एक छोटा तरासू. एक one small piece of roti that is chapati and also a tarasu. Tarasu means weighing balance. The thing that we use to weigh things, that weighing balance. पहला दृश्य. कोई कमरा. First scene, any room. कमरे के बीच में एक मेज़ा है जिस पर मेज़ पोश पड़ा है. And in the middle of the room there is a table and on that table there was a table cover जो कि आगे से ढका है. मेज़ा पर एक रोटी का टुकड़ा है. So that table cover is covering the full table and on the table there is a piece of roti, piece of chapati. मेज के नीचे एक तराजू रखा है. Below the table there is a weighing machine पर दिखाई नहीं देता. It was below the table and the table was covered by the table cover so we are not able to see the weighing machine. म्याऊ म्याऊ की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है. And that is a big room and from the right side, दाहिनी तरफ means from the right side, black cat is coming from the right side and from the बाई तरफ that is from the left side white billy, सफ़ेद बिल्ली is coming. How they are coming? Meow meow meow. With this sound the white black cats are entering into the room. काली बिल्ली. Black cat. बिल्ली बहन नमस्ते. काली बिल्ली was telling to white बिल्ली. बिल्ली बहन. बहन means sister. Cat sister नमस्ते.
सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते. Safed Billy, white Billy was also telling back namaste, namaste sister, namaste. Kali Billy. Now I know that you people know Kali Billy means black cat and Safed Billy means white cat. So I won't repeat it on each line. Kali Billy, अच्छी तो हो? Kali Billy was asking, are you all right? Safed Billy, अच्छी क्या हो? भूखी है. What good? White cat Safed Billy was saying, what good, I am feeling so hungry. भूखी है means I am feeling so hungry. काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ. I am also hungry. सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ. White cat was saying, I am searching for something to eat. काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ. For the same purpose I also came outside. सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती. White cat was saying, I am getting a smell of रोटी. महक means smell. काली बिल्ली, मेरी भी नाक बताती. पास का ही है. My nose is also telling the same that रोटी is somewhere near. सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वो रोटी. Then white Billy told, look there, it was on the table. That roti was on the table. Labku, koi aa na jaye to. Come, let's go and take it fast before anyone comes. Who had found out the roti? Yeah, white cat had found out the roti. See, the roti is on the table. काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली. काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है. White cat had seen the roti, but what the Kali Billy, black cat done? Hey, tu dar. Hey, you are afraid one. You are foolish. You are just looking and seeing and staying there itself. I'll go and take it. And she just jumped and took the roti and was going out. सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी. White cat was telling, ठहर, wait. Where are you going? It's my roti. Give me my roti back. काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसी तेरी? रोटी मेरी. रोटी yours? How come it's yours? It's mine. सफ़ेद बिल्ली, मैंने दिखाती तो तू जाती. I have first seen that roti and I had shown it to you, right? Black cat, काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं है? Black cat was telling, you had shown me the roti. Why I don't have any eyes? I can't see it. डरती थी उस तक जाने में. जा डरपोक, कहा कि जा भाग, रोटी मेरी. Black cat was saying, you were afraid of going there and taking that roti. Now I went and took it and now you're saying it's your roti. Go away. It's not your roti, it's mine. सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी. I have told you that it's my roti and I won't allow you to take it and go. काली बिल्ली, देख, राज़े मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी. Black cat was telling, hey, move away from my way. I'm not giving to you this roti. I want to go. Move away from my way. सफ़ेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है. Let's see how you will take it and go. जो पहले देख हक उसका है रोटी पर. Who had seen the roti first, that's their roti itself. I have seen it first, so it's my roti. पहले दौड़े, दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा. But who went and took the roti? I only jumped up and took the roti, so it's my roti. सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी. White cat was telling that roti is mine. काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी. Black cat was also telling that roti is mine. दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घूरती है. They both were fighting each other and telling that it's my roti and they both were staring. घूरती है means they were staring at each other. बंदर का प्रवेश. Next scene is monkey is entering into the room. बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? What happened? You both are fighting. तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से. तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से. रोटी किसकी? Monkey was asking. One is telling your roti and another one is telling that it's her roti. Actually, whose roti is this?
मैं इसका फैसला करूँगा. I will find a solution to this problem. चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ. कचहरी means court. Okay, let's go to the court and get a decision on this problem. बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है. From both of them, monkey took the roti and he was moving in front. दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती. The two cats are going behind the monkey. दूसरा दृश्य, द सेकेंड सीन, बंदर की कचहरी. monkeys court. बंदर मेज़ पर बैठा है. बंदर was sitting on the table. रोटी का टुकड़ा सामने रखा है. That small piece of roti was near to him. दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी है. And those both cats are standing on the sides of the table. बंदर सफ़ेद बिल्ली से, monkey to white cat. बोलो तुमको क्या कहना है? ओके, टेल व्हाट यू वांट टू से. सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है. आई एम द फर्स्ट वन टू सी द रोटी, सो दिस रोटी इज़ माइन. बंदर काली बिल्ली से, मंकी टू ब्लैक कैट. बोलो तुमको क्या कहना है? टेल व्हाट यू वांट टू से. काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं चपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है. श्रीमान मंकी, एक्चुअली आई एम द फर्स्ट वन हु जम्प्ड एंड टुक द रोटी, सो दैट रोटी विल बी माई इटसेल्फ. बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बंदर टू वाइट कैट. एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? हैव यू सीन द रोटी विथ वन आई और विथ द टू आईज? सफ़ेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से. वाई ओनली वन आई हैड सीन विथ माई टू आईज. बंदर काली बिल्ली से, मंकी टू द ब्लैक कैट. एक टांग से चपड़ी थी या दोनों टांगों से? टांग मीन्स लेग. हैव यू जम्प्ड विथ योर वन लेग और विथ बोथ ऑफ योर लेग्स? काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से. ओ माई टू लेग्स, विथ माई टू लेग्स आई हैव जम्प्ड टू टेक द रोटी. बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? इज देयर एनी आई विटनेस? गवाह मीन्स विटनेस फॉर योर प्रॉब्लम. दोनों बिल्लियाँ, both cats together told, कहीं न कोई न कहीं. oh no, there are no witnesses for a problem. बंदर, बात बराबर. मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए. मेरे पास धर्म कांटा है. okay, I am having a solution for your problem. I will make this roti into pieces and I will give you both equal amount. I have a धर्म कांटा मीन्स आई हैव अ वेइंग बैलेंस विथ मी. बंदर मेज़ के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है. मंकी टेक्स द वेइंग बैलेंस विच वॉज केप्ट अंडर द टेबल. दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलटों पर रखते हैं और उठाता है. एक पलटा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर. वॉट ही हैड डन? He had torn the chapati into two pieces and he had put that on both the sides of the weighing balance, and he just takes the weighing balance up. And what will happen? One side of the weighing balance goes down and another side goes up. We know that in a weighing balance the both plates have to come on the same line, then only both weight will become equal. See in the picture, if the weighing balance have to be of equal weight, they both plates have to be on the same line. बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ. He just torn the chapati into two pieces and he put on the two plates of the weighing machine. What happened? One side went downwards and another side went upwards. Which side goes down is having more weight. Then the monkey told that, okay, here this part is having more weight. I will just eat some part of the roti so that its weight will become less. फिर तराजू उठाता है. अब पहला पलटा ऊपर है और दूसरा नीचे. Now what happened? The part in which he had ate the roti, it went up. That means that part become less heavier and the other part become more heavier. बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला. Oh, now the other part became heavy. अब उसका थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ. So what I will do? I will eat some part from that chapati. So that will be equal to this part.
फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलटा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर. Now again he was weighing it both, and what happened? The one which he had ate came up again and another one came down. बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला. Oh, now this part of the roti become more heavy. टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं. Monkey is telling there is some problem with this roti. See, one side will become small and another one will become big, and another one will become small and the next will become big. There is some problem in this roti itself. मुँह थक गया. After eating this, my mouth is paining. बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया. And my hand is also paining by taking this weighing machine up. बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया. Now the cats understood that this monkey was cheating them. हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए. They had just kept their hand opened and they both were looking at each other. What is this? This monkey, he had eaten almost all of our roti. He just cheated us. सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाइए और तराजू. Oh monkey, you become tired. Okay, then no need to take your weighing balance up. काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दो, हम आपस में बांट खाएंगे. Black cat says, whatever left roti, give it to us. We will share it and we will both eat it together. बंदर, नहीं तुम फिर झगड़ेंगी. No, you people will fight again. मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ. Allow you peoples to fight. I will just make sure that there is no reason for you to fight with each other. बच्चा खुच्चा भी खा लेता हूँ. Whatever is left, that roti also I will eat. If I won't eat, you peoples will make fight each other on that roti also. So I won't allow you to fight. I will only eat the roti. इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है. And he told this much, and what he had done, the leftover roti also he had himself, and he took his tarazu, that weighing balance, and he just left from there. दोनों बिल्लियाँ, both the cats, आपस में झगड़ा कर बैठी. बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता. बंदर हट पा रोटी. We both were fighting each other, and we become so foolish so that we had given our roti to monkey, and he is very clever one. He had the roti and he went away. Now there is no need of any regrets. Okay, what's gone is gone. Who is the author of this play? Harivamsh Rai Bachchan. Harivamsh Rai Bachchan. Hope so you people like this drama. If you like, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.